Or okay, is my screen visible properly? Yes, sir. Okay, fine. Very good. So we have seen two parts in biomolecules. The first was carbohydrate. The next section was amino acids. And so the third most important section, that is nucleic acid. Apart from these three major topics, you also have two subtopics, I would say very small topics, that is not two, but rather miscellaneous में आप रख सकते हैं. Hormones, what are different hormones? Enzymes and vitamins. ठीक है, किसके deficiency से क्या होता है? So these topics are there, but this is completely factual topics. Okay, so these we can cover up while we are revising the biomolecules chapter, hormones, enzymes and vitamins. तो इसमें जो सवाल आए हैं, you will be only looking at the previous year questions. Fine. तो साथ ही साथ हो जाएगा almost जो भी it has been asked about regarding most of the concepts. ठीक है, so we will be looking at these hormones, enzymes and vitamins from the lens of previous year questions. Now, regarding nucleic acid, so what we are studying in nucleic acid is basically in nucleus we have chromosomes. In nucleus we have chromosomes which are responsible for the heredity and the passing of information according to heredity. And these chromosomes, they have proteins and other biomolecules which is known as nucleic acid. Now, nucleic acid is responsible for the transfer of the information. That is why it is important to acid. Fine. Now, the next slide is just regarding the importance. The chromosome carry the basic genetic material, that is DNA, which is responsible to provide hereditary characteristics and genetic information to the various cells. Now, this particular line, it is a trivial knowledge right now, and it's not new for all of you guys. Like even people who just watch movies also, they would know that acha ha DNA RNA kuch hota hai. Fine. So in DNA say we can extract what are the different characteristics about a particular person. Now let us understand the nucleic acid. Now first is the classification. So there are two types of nucleic acid. We have deoxyribonucleic acid, ribonucleic acid. So you can see that we have ribonucleic acid, and if you remember, then what you will get? Deoxyribonucleic acid. So we have RNA, that is ribonucleic acid, and we have DNA, which is deoxyribonucleic acid. Now, nucleic acid, these are generally a long chain polymer. So they have different units. And it is like a chain. Chain kya hota hai? You have one unit which is linked with another unit, which is linked with another unit, which is linked with another unit. Huh? So those we have, those who are learning the carbohydrates starting say. So in carbohydrate, we have long chain polymer of carbohydrate. They are known as polysaccharides. Right? उसी तरह से यहाँ न्यूक्लिक एसिड का जो मोनोमर होगा, इट इज अ चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. ठीक है. So what is nucleotide? Nucleotide is the monomeric unit. ये एक कड़ी है. This is one link. ठीक है. This is one thing. This one unit is nucleotide. So nucleic acids are what? If they ask what is nucleic acid, so they are long chain polymers of nucleotides. So they are also called polynucleotides. So nucleic acid का एक क्या हो जाएगा? Also known as polynucleotides. I will tell you guys when you have to copy the slide. ठीक है. एक तो चीज ये है, दूसरी चीज ये that all these slides whatever you are seeing here, I will upload it on the group as a PDF. Fine. Now, moving on. First of all, nucleic acid, and in nucleic acid we saw that अगर आपको nucleic acid समझना है, then since nucleic acid is a polymer, you will have to understand the monomeric unit. If you understand this monomeric unit, then you can understand about the linkage, and then you can understand the property they are bringing when they are all together. So सबसे पहली चीज, first have to understand what is this one monomeric unit that is making the polymer. So the monomeric unit is what it is, a nucleotide. Now, what are the different things that we have in a nucleotide? We have a 5-carbon monosaccharide. ये देखिए sugar होता है. Sugar of what? Sugar of how many carbon atoms? 5 carbon atom का sugar होगा. Then you have a heterocyclic base that contains nitrogen. So आपके पास होगा base. This basically contains the nitrogen. And then you have a phosphate ion. उसके बाद क्या होता है आपके पास? You have phosphate ion, that is PO4 3 negative.
So you have sugar, base, and PO4 3 negative. These are the three components of nucleotide. Nucleotide के three components है. You don't have to write this slide also. Now, what are the अब देखिए on the basis of this 5 carbon monosaccharide जो sugar होता है उसी के basis पे DNA और RNA. ठीक है. So please see here. Look at the RNA first. So we have oxygen. यहाँ पे भी oxygen आपके पास ये दोनों same हो गए. Second carbon atom में ऊपर OH नीचे H. यहाँ पे ऊपर H नीचे H नीचे ऊपर OH नीचे H. This is also same, but you can see that this is oxygen. The first carbon atom, this is the second carbon atom. In second carbon atom, we have OH here, but we don't have the oxygen here. We just have the hydrogen. So since you can see that the absence of oxygen in the second carbon atom, we are removing oxygen. तो वहीं ये राइबोस से क्या हो गया डीऑक्सीराइबोस. मेक सेंस. सो दिस पर्टिकुलर शुगर इज डीऑक्सीराइबोस और इससे जो न्यूक्लिक एसिड बनेगा दैट विल बी डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड. मेक सेंस? यस और नो प्लीज टेल मी गाइस. याद रहेगा? इसको प्लीज बना लीजिए सर. मेक दिस स्लाइड. मेक दिस न्यूक्लिक एसिड डीएनए और आरएनए में शुगर moiety, जो शुगर कंपोनेंट है दैट इज डिफरेंट. Here we have beta D2 deoxyribose. That means we are removing oxygen from the second carbon atom. ठीक है. 2 deoxy का मतलब second carbon. And this is beta D ribose. Yes. Draw this. Parker, draw कर लिया आपने? Yes, Parker. Mari Parker, am I audible? अरे नहीं. अच्छा. स्क्रीनशॉट ले रहे बच्चे. नहीं मतलब मेरा लिखाने का मतलब दूसरा होता है थोड़ा. ये आप लोग एक बार बना लें. ठीक है. पीडीएफ तो हम भेज ही देते पार्कर. हाँ ठीक है. दैट मेक सेंस. नो प्रॉब्लम. इट्स फाइन. इट्स फाइन. रेज योर हैंड वंस यू डन गाइस. पहले राइबोस का स्ट्रक्चर बना लीजिए. ठीक है. और फिर डीएनए के आपको देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए. सेकेंड कार्बन एटम से आपको OH निकाल देना. ठीक है. यू प्रैक्टिस इट लाइक दैट. वेटिंग फॉर पिया, मीर, तारीफ, रबा, सफिया, शाहिद. मेनी पीपल आर नॉट. सर व्हाट इज टू? टू का मतलब है कि यू आर रिमूविंग ऑक्सीजन फ्रॉम द सेकेंड कार्बन एटम. ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकेंड कार्बन है. सो ये राइबोस होता, बट राइबोस से डीऑक्सी कर रहे हैं. राइट. सो यू कैन रिमूव ऑक्सीजन फ्रॉम एनी ऑफ द कार्बन. तो कौन से कार्बन से निकाल रहे हो? यू आर रिमूविंग फ्रॉम द सेकेंड कार्बन. मेक सेंस पार्कर? Yes, sir. तारीफ फॉर ओपन चेन स्ट्रक्चर लाइक दिस. ये ऐसा होता है. दिस इज Haworth projection. Haworth. What is this D? जैसे डी ग्लूकोज होता है, एल ग्लूकोज होता है ना, दैट इज डी एंड एल. Just waiting for Chavez and Tarif.
नो, सो वी हैव सीन वी हैव डीएनए एंड आरएनए. नाउ हम लोगों ने देख लिया व्हाट इज द डिफरेंस इन द शुगर. ओके. नाउ शुगर होता है और उसके बाद एक बेस होगा. इट विल हैव वन बेस. नाउ फॉर डीएनए यू कैन आइदर हैव एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन. ठीक है. सो यहाँ पे आपके पास एजीसी जो है, दिस इज सेम फॉर आरएनए आल्सो. यू विल गेट एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन. और आई एम नॉट सेइंग एंड. ठीक है. आपको एक ही न्यूक्लिक एसिड में तीनों नहीं मिलेंगे. यू विल हैव एक शुगर होगा, एक बेस होगा. नाउ दैट बेस फॉर डीएनए कैन बी एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन. बट इन फॉर आरएनए यू हैव एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल. सो हियर इज द डिफरेंस इन द बेसिस. ठीक है. सो विच ऑफ द फॉलोइंग बेस, ऐसे आ सकता है ना सवाल. विच ऑफ द फॉलोइंग बेस इज नॉट प्रेजेंट इन आरएनए, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस इज नॉट प्रेजेंट इन डीएनए. ठीक है. तो थाइमिन एंड यूरेसिल कैन बी एन आंसर. ठीक है. सो प्लीज कॉपी दिस डाउन. ऑल्सो राइट दिस ब्रैकेट वन, है ना, वो भी इंपॉर्टेंट है. राइट दिस डाउन एंड रेज योर हैंड ना. यहाँ पे आप थोड़ा सा मार्क कर लेंगे, स्टार मार्क, थाइमिन एंड यूरासिल. वेटिंग फॉर आयशा, डेबोरा, सफिया एंड शाहिद, रेन्यूनेंस एंड शावेज तारिक. अच्छा, बहुत लोग हैं अभी तो. जस्ट वेटिंग फॉर तारीफ नाउ. जस्ट वेटिंग फॉर तारीफ नाउ. Oh, Tarif is not in the class. I think you cannot hear me. Fine. Next, we have the structures of different bases. Okay. So now practice this structure. When I will send you the PDF now, you will practice this structure. The most important thing you have written this down: thymine and uracil. ठीक है. ये आपको याद रहना चाहिए. Structures रिटर्न और इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, ROI. यहाँ पर रिमेंबर हाउ मेनी स्ट्रक्चर्स, 1 2 3. इधर भी 3 है, 4 5 5. बट सवाल आने के चांसेस इट इज लाइक 5% 10% चांसेस होते हैं न्यूक्लिक एसिड के जो बेसिस हैं उनका स्ट्रक्चर पूछ ले. रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज वेरी लेस. सो राइट नाउ अभी आपको लिखने की जरूरत नहीं है. व्हेन आई विल सेंड यू द नोट्स, वहां फिर आप अपने नोटबुक में कम से कम आपके लेकिन होना चाहिए. ठीक है. सो जस्ट टू शो यू गाइस, एडेनिन एंड गुआनिन, यू कैन जस्ट रिमेंबर दीज टू, दैट ये इसमें दो साइक्लिक रिंग होते हैं. ठीक है. एडेनिन और गुआनिन में क्या होते हैं, देयर आर टू साइक्लिक रिंग्स. राइट. द रेस्ट थ्री that we have, cytosine, thymine and uracil, they have single rings. ना ये बेंजीन नहीं बना रहे हैं, हम बता रहे बस आप लोगों को. ठीक है ना. बट यहाँ पे एक रिंग है. ठीक है. एंड एडेनिन और गुआनिन में कितने हैं, दो रिंग्स है. ठीक. ये बस आपको थोड़ा याद रख लीजिए तो कुछ काम बन जाएगा आप लोग का. राइट. चलिए. नाउ देर आर ways to remember, trick to remember for the basis for DNA, adenine, guanine, cytosine and thymine. तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं आप, अरे गुस्सा करेगा तो, बट इट्स नॉट नेसेसरी. ठीक है. और आरएनए में अरे गुस्सा करेगा यू. राइट. सो इट्स नॉट वेरी मच डिफिकल्ट. डीएनए के लिए बस याद रख लीजिए आप ऐसी थाइमीन, और फिर आरएनए के लिए क्या है, यूरासिल. ठीक है. इफ यू वांट टू रिमेंबर दिस यू कैन रिमेंबर दिस आल्सो. अरे गुस्सा करेगा तू और अरे गुस्सा करेगा यू. फाइन. नाउ मूविंग ऑन. न्यूक्लियोसाइड. अब यहाँ पे देखिए आप,
इसमें ना बहुत बच्चों को ना दिक्कत आती है, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, तो न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड ध्यान दीजिएगा। न्यूक्लियोटाइड, शुगर प्लस बेस, ये है न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, शुगर प्लस बेस प्लस फॉस्फेट, दिस इज न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो बताइए पहले क्या बनेगा। वी आर एडिंग थिंग्स अप ना, तो शुगर ले लिया हमने, उस पे हमने डाल दिया, न्यूक्लियोसाइड। तो आपको मिला न्यूक्लियोसाइड मिला। और बेस के बाद फिर हमने जब फॉस्फेट डाल दिया तो क्या मिला, न्यूक्लियोटाइड मिला। ठीक है, सो हाउ आई रिमेंबर दिस इज कि एस अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है, तो बनाने के भी व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग समथिंग तो उसके भी सीक्वेंस में पहले न्यूक्लियोसाइड आएगा। शुगर और जैसे ही आपने बेस डाला तो साइड हो गया, एक और चीज डालेंगे तो एस के बाद टी आता न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। ठीक है, मेक सेंस ये, सुनो प्लीज मी गाइस, समझ में क्या कर रहे हैं हम। फर्स्ट शुगर प्लस बेस, तो पहली चीज क्या मिलेगी, एस अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इफ यू एड वन मोर थिंग दैट इज फॉस्फेट देन यू विल गेट टी टाइड। गॉट इट गाइस, सुनो प्लीज मी, बात समझ में आई नहीं आई। यस आना सर। तो, यस सर। ठीक है, आसान चीज है वैसे, मतलब हर चीज में ट्रिक की जरूरत नहीं होती है, बट अगर कहीं कंफ्यूज हो गया तो फिर इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है ना, कितना ही बस आपको याद रखना है यहाँ पे, दैट शुगर प्लस बेस विल गिव यू व्हाट, न्यूक्लियोसाइड। शुगर प्लस, नाउ द बेस इज एडेड ऑन द फर्स्ट कार्बन एटम, इसको वन प्राइम, ये ऐसे वन प्राइम वन डैश है, इसको वन प्राइम बोला जाता है। तो बेस कहाँ पे एडेड है, बेस इज एडेड ऑन द फर्स्ट कार्बन एटम। In nucleoside, the sugar carbons are number 1 prime, 2 prime, 3 prime in order to distinguish these from the bases। ठीक है, तो ये कौन से कार्बन पे, 1 प्राइम कार्बन पे। ठीक है ना, और ये 5 प्राइम पे आपका फॉस्फेट लगता है। सो हियर यू हैव, दिस इज द शुगर मोइटी, दिस होल थिंग इज शुगर, ये आपका बेस आ गया और ये आपका फॉस्फेट आ गया। गॉट इट गाइस, जैसे ऑफिशियल में गाइस। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड होगा शुगर प्लस बेस प्लस फॉस्फेट, एंड फॉस्फेट इज इन विच इज इन द फिफ्थ 5 प्राइम कार्बन एटम। बेस होगा 1 प्राइम में और फॉस्फेट होगा 5 प्राइम में। कोई दिक्कत नहीं ना, कैन आई मूव ऑन। यस सर। अब देखिए नेक्स्ट थिंग इज लिंकेज। लिंकेज अब है ना, हम लोगों ने एक यूनिट देख लिया, न्यूक्लियोटाइड को देख लिया। नाउ वी हैव टू सी हाउ टू डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड आर, ये दोनों टाई कैसे हुए ना, सो किसी द फॉर्मेशन ऑफ डाई न्यूक्लियोटाइड ना, तो दो को देखते हैं। सो यू हैव वन न्यूक्लियोटाइड, द होल थिंग। शाह वजीर कौन है भाई, शाह वजीर कोई नहीं है मेरे इसमें। So here is one nucleotide and this is another nucleotide. When these two are added, we get phosphodiester linkage. Phosphodiester linkage में क्या होता है, जो phosphate है, phosphate it adds to the 3 prime carbon atom। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आपका नाम ऐसे क्यों आ रहा है, शावेज है, ओके फाइन। ठीक है, सो phosphodiester linkage is what, in phosphodiester linkage what you will have, जो आपके पास 5 प्राइम कार्बन एटम में फॉस्फेट है, दैट विल ज्वाइन टू द 3 प्राइम ऑफ नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड। मेक सेंस, याद रहेगा, 5-3 लिंकेज होता है, 5 प्राइम से 3 प्राइम। 5 प्राइम कार्बन एटम ऑफ शुगर, उसका फॉस्फेट, इट विल ज्वाइन टू द 3 प्राइम कार्बन एटम ऑफ द अनदर शुगर moiety। So this is the linkage and it is known as linkage। Now moving on, the structure, this is dinucleotide। अब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाएंगे, so you will get a nucleic acid। So in general they have this type of structure। you have sugar which has a base, फिर phosphate आता है, phosphate फिर अलग सेकंड शुगर मॉलिक्यूल से जुड़ा है, फिर बेस है, इसी तरह से chain goes on। then again phosphate is tied to sugar which has a base and then again phosphate। please write this down, इसको लिख लीजिए प्लीज।
ठीक है, ये 5 प्राइम 3 प्राइम लिख लीजिएगा। इसका मतलब दिस वन, ये एक न्यूक्लियोटाइड यूनिट है। शुगर का 5 प्राइम में फॉस्फेट है, फिर फॉस्फेट अगले शुगर के 3 प्राइम में जुड़ रहा है। राइट दिस डाउन, रेज योर हैंड वंस यू आर डन। तो सत्या, शाहिद एंड शावेज, शावेज का डन और व्हाट, और जस्ट वेटिंग फॉर सत्या नाउ। Everyone is done. Next thing is that the nucleic primary structure. So this primary structure is just like what are the nucleotide. Nucleotide 1 is attached to nucleotide 2, attached to nucleotide 3. This is what? This is the primary structure. Exactly what nucleotide is attached to the next one. So sequence जो है ना, that sequence give rise to primary structure. Now this primary structure जो यहाँ पे जो chain है, however this chain particularly curls up और ये किस तरह से shape लेके आता है अपने आप में, उसको हम लोग बोलते हैं, that is known as the secondary structure. ठीक है, so generally this point is missed, but nucleic acid also have two type of structure. It has a primary structure and it has a secondary structure. ठीक है, it has a primary is occurring with, what is the next nucleotide. That sequence is what, when you are going to look at the nucleotide, if you are going to look at the nucleotide, that is the primary structure. The nucleotide and you see the whole nucleic acid, that is the secondary structure. Make sense? Yes or no, please tell me guys. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ओके। Yes. इस पार्ट को लिख लीजिए जरा, जस्ट दिस थिंग। You have the keyboard, right? So keyboard has a particular sequence कि आप जब कीबोर्ड में कीज को देखिएगा, so it would look a certain way, but overall keyboard उसका एक अपना look होता है, right? Like it's for everything, which is made up of different things ना, उसका एक अपना मतलब एक, जब if you're looking at each part, then that part has some structure to it, and then when you look at the overall thing, it has a certain different structure. ठीक है, I hope you guys are done. Just tell me, just tell me no if you're not done. This is just nucleic acid I was writing. You have just have to write this box, nothing else right now. Okay. Krishna Priya, did you leave very early? Can you Yes, just put that slide again? Achha, this previous slide.
I told you, Mr. Priya, that we are going to do a new topic here. You don't have to know anything about whatever has been done previously. ठीक है, it's a completely new topic. कोई relation नहीं है इसका. Then Travis. Yes. Okay. Here. Now, this secondary structure of the DNA, it was found by James Watson and Francis Crick. Now, these are the main names which have been attributed, but there is another name which is her name is Rosalind Parker, if I remember correctly. So actually, she was the one who took an X-ray, which further led James Watson and to deduce the double strand helix structure. So Rosalind Parker, I hope I am. Yes, sir. No, not you, Parker. Just a second. It was Rosalind Parker. Not Rosalind Parker, Rosalind Franklin. So she was the one who actually took the X-ray. James Watson and Francis Crick. Crick was a crooked person. Crick, he took that X-ray, particular X-ray, and then he interpreted. And also Rosalind Franklin, she actually died before James Watson and Francis Crick. They gave the structure of DNA. Right. Now they gave the double strand helix structure. So this is important that DNA का structure क्या होता है? So they have a double strand helix structure of DNA, and that structure is very famous now. You must have seen. So this is one helix, and the other helix will be something like this. Right. So now these two strands, when I'm saying strands, you actually understand, right? You have one hair or strand type of thing, and then you have another strand. So those two are individual strands. They are not connected anywhere. But so why they are so close and why they are having this type of structure? So they are bonded with hydrogen bonds. So these two are attracted with what? These two are attracted with hydrogen bond, and that is why this give rise to the helical structure. So the two nucleic acid chain. So these are two different chains. They are never connected. One chain and the another chain are wound about each other and held together by hydrogen bond between the pairs of bases. Okay, so this whole thing, these two lines, please write it down. Also write this: James Watson, Francis Crick, and Rosalind Franklin. Last में लिखिएगा वो मतलब just to give her credit. When asked in examination, so obviously you will have to write James Watson and Francis Crick. She is also known as the Dark Lady of DNA. But I'm not saying that James Watson and Francis Crick, they just took the credit of Rosalind Franklin's work, but rather what I am saying is that they did not give the credit to Rosalind Franklin what she deserved. James Watson and Francis, they also did a lot of work, most of the work, but all of that was only possible because of the X-ray of DNA which was done by Rosalind Franklin. If the X-ray was not present, then they could not have gone through the further 3D model that they developed. Okay, I hope you guys have written this down. The two lines, James Watson and Francis Crick gave the double strand helix structure for DNA. The two nucleic acid chains are wound about each other and held together by the hydrogen bond, by hydrogen bonds between the pairs of bases. Right? Now, next point that you have to understand, that this particular chain, it is complementary to the another chain. So you have two chains, right? Let's suppose you will write chain A and chain B. So if you know the structure of chain A, if you know the monomeric units, like the primary structure of chain A, that here we have
this nucleotide, this nucleotide, this nucleotide, this nucleotide, and here we have this nucleotide. So if you know only one of the structures, अगर आपको सिर्फ A पता है, then you can find what is the B chain. So we can say that A and B both are complementary. अगर आपको A पता है, then you can figure out B, what will be the sequence of nucleotide in the B chain. If you know the sequence of nucleotide of the B chain, then you can figure out what is the sequence of nucleotides in the A chain. Okay, so this is the same thing. The two strands are complementary to each other because the hydrogen bonds are found between specific pairs of bases. तो जिस DNA की बात करें अगर हम, तो in DNA the base pairs which forms bond are ATGC. Adenine it forms bond with thymine, and guanine it forms bond with cytosine. ठीक है? So ATGC. That for example, if one of the chain is like this, A, G, C, A, T. ठीक है? So you have nucleotide. See, each and every nucleotide, it is not going to differ in the pentose sugar, क्योंकि दोनों, in all the nucleotide, the pentose sugar will be deoxyribose. The phosphate will be phosphate. It is only going to differ on the nitrogen base. Base differ करता है nucleotide. ठीक है? So one of the nucleotide it has A, the other has A means adenine, G means guanine, अगला है आपके पास cytosine, then अगला है फिर adenine, फिर thymine. So in the complementary chain, A के opposite क्या होगा? A के opposite होगा T. Make sense? Yes or no? Please tell me, guys. Yes. और G के opposite क्या होगा फिर? C. C. C के opposite? G. 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 A के opposite? T. 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 And T के opposite? A. 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 है ना? So if you have A, तो complementary वाले में क्या होगा? T होगा. If you have T, then the complementary will have A. If you have C, then G, and G, then C. Make sense, everyone? Yes or no? Tell me, guys. Krishna Priya, Aram, Shahid, Deborah, Bhai Parker. All of you guys make sense? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है? Now, next, please see. This is basically just the structure, the base pair, and how they are bonded to each other. So you can see, एक और चीज आप ये कर लीजिए जरा, the number of hydrogen bonds. तो GC, ठीक है? G और किसका होता है? C का होता है. I mean, you can directly remember it. देखिए, हम ट्रिक बता देते हैं आप लोगों को, तो ये मत समझिए कि हर छोटी चीज का ट्रिक जरूरी है, बट कंफ्यूजन जहां आए तो फिर ट्रिक रखना अच्छा हो जाता है. ठीक है? तो जीसी आप ऐसे ग्रुप चैट, जीसी इज ग्रुप चैट ना, आप लोगों को पता है जीसी ग्रुप चैट होता है? हाँ या ना तो बोल दो भाई. Yes, sir. What is the minimum number of people that you should have in order to create a group chat? कम से कम कितने लोग होने चाहिए तब Three. ग्रुप चैट More का? than 2. हाँ हाँ, 3 कम से कम है भाई, तो 3 ना. तो जीसी में कितने बॉन्ड्स होंगे? 3 होंगे. ठीक है? और एटी में 2 होंगे. 3-2 का खेल है. सो इन जीसी वी हैव 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, एटी में 2 होगा. याद रहेगा ऐसे? Yes. Yes. ठीक है? So there are 3 hydrogen bonds in GC, and in AT we have 2 hydrogen bonds. Now, moving on. RNA, right? So RNA, in secondary structure of RNA, helices are present which are only single stranded. So DNA it is what? Double stranded. और RNA जो होता है that is what? Single stranded. Right? Sometimes they fold back on themselves to form double helix. But ये ध्यान रखिएगा, when I said मतलब हेलिकल स्ट्रक्चर इनका भी आ जाता है, बट दैट इज बिकॉज ऑफ ओनली सिंगल चेन. मतलब एक चेन है, ये ऊपर जाके फिर ऐसे करके हेलिकल स्ट्रक्चर बना लेगा. ठीक है? द सेम चेन विल मेक अ हेलिकल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर. बट चेन कितना होता है? चेन सिर्फ एक ही होता है. ठीक है? चेन एक ही होता है. वो घूम के फिर हेलिकल स्ट्रक्चर बना ले, वो अलग बात है. बट द चेन इज व्हाट? चेन हमारे पास एक ही होगा. राइट? सो आरएनए, इसको लिख लीजिए जरा, दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको लिख लीजिए. In secondary structure of RNA, helices which are only single stranded, sometimes they fold back on themselves to form double helix structure.
Is anyone writing yes or no? Please tell me, guys. Is anyone writing? Yes, sir. आपके स्कूल में हाँ Kiran is asking in chemical kinetics the derivation of integrated rate equation is important. स्कूल में पूछ सकते हैं, बोर्ड्स में जनरली नहीं आता डेरिवेशन. ठीक है, बोर्ड्स में यू विल नॉट सी डेरिवेशन क्वेश्चन, बट हाँ देयर इज डेरिवेशन ऑफ द यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट. यू रिमेंबर एरम कि जीरो ऑर्डर में यूनिट क्या होगा, उसका भी एक डेरिवेशन होता है. रेट को लिखिए मोल्स पर लीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू के इनटू द कंसंट्रेशन की पावर. वो बोर्ड्स में लेकिन पूछा गया है एक दो मरतबा. ओके एरम, ओके. ठीक है. जो एक बार टेस्ट में भी हमने पूछा था ये सवाल ना, इफ यू रिमेंबर. पता नहीं आपके इसमें था या नहीं. डेरिवेशन ऑफ यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, ठीक है, वो बोर्ड से पूछा गया. अदरवाइज डेरिवेशन ऑफ इंटीग्रेटेड रेट लाइक इक्वेशन वो स्कूल वाले पूछ सकते हैं. नाउ नेक्स्ट, व्हेन वी टॉक अबाउट आरएनए, देयर आर थ्री टाइप ऑफ आरएनए. और एक आरएनए तो आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से पता होगा, दैट इज मैसेंजर आरएनए. देन वी हैव राइबोसोमल आरएनए एंड देन वी हैव ट्रांसफर आरएनए. So these three types of RNA, they are having different functions. Now moving on, कि आपके पास हर एक का क्या फंक्शन होता है, प्लीज. One of the important function of nucleic acid is the protein synthesis in the cell. The proteins are synthesized by the various RNA molecules in the cell, but message of synthesis of a particular protein is present in DNA. क्या मतलब इस सेंटेंस का वो समझिए जरा. RNA will synthesize RNA will synthesize the protein. Order will be given by DNA. Order कहां से मिलेगा? Got it, guys? इसमें please tell me. Yes. Understood this point? इसको लिख लीजिए. मतलब देखिए, इसको टेक्निकल लैंग्वेज में ये बोला जाता है मैसेज फॉर द सिंथेसिस ना. तो ऑर्डर देना तो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है आपको, कैसा बात है. बट मैसेज फॉर द सिंथेसिस जो डीएनए के पास मौजूद होता है कि ओके फाइन, दिस टाइप ऑफ पर्टिकुलर प्रोटीन शुड बी फॉर्म. और नाउ दिस क्लास नॉट मोर 15-20 मिनट्स मोर. ठीक है, चलिए एक और काम कर लीजिए. इन दिस स्लाइड ना वी हैव डिफरेंट, आई थिंक आई डोंट हैव स्लाइड फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वगैरह है यहीं पे ना. आई थिंक वी शुड राइट द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ दीज आरएनए. ठीक है. सो मैसेंजर आरएनए का क्या काम होता है, प्लीज भाई. कैरीज जेनेटिक कोड फ्रॉम डीएनए टू, Sir, या टेल मी. here like DNA transcripts the mRNA. डीएनए व्हाट? DNA transcripts the mRNA. डीएनए, अच्छा. यहाँ बायोलॉजी वाला वो जो ये है, व्हाट डू वी से, द सेंट्रल डॉगमा ट्रांसक्रिप्शन, और ये you're asking about that. Yes, yes. That I don't remember actually. It's not part of synthesis ना, वो part नहीं है. I have learned this बहुत पहले when I was in my bachelor's at that time. So mRNA are the transcripts.
ठीक है, लेट मी राइट दिस डाउन, मे बी उस तब तक पढ़ाते पढ़ाते दिमाग में आ जाए. दिस कैरीज द जेनेटिक कोड फ्रॉम डीएनए टू आरएनए, यानी ये राइबोसोमल वाला जो पार्ट है ना, यहाँ पे वो लेके जाता है, और फिर यहाँ पे दिस सिंथेसिस टेक्स अकर्स हियर. सिंथेसिस, साइट ऑफ सिंथेसिस लिख देते हैं इसको. साइट ऑफ सिंथेसिस होता है, साइट ऑफ सिंथेसिस. नो, ट्रांसफर आरएनए क्या होगा, दिस जस्ट ट्रांसफर डिफरेंट अमीनो एसिड्स. ठीक है, इसको लिख लीजिए. ट्रांसफर्स amino acid. Sir, ribosomal RNA are found in ribosome. Yep. राइबोसोम में ही होता है ना सिंथेसिस. Yes, sir. नो. amino acid from cytoplasm to ribosome during synthesis. Fine. See, transcripts, I don't remember this transcript, but I think what you're saying is correct. Maybe messenger transcript in the sense that वो लेके आता ना information, that what are the sequence that has to be formed, then complementary chain is formed in the ribosome, right? Yes, sir. I think that's it. But messenger RNA is a transcript. I don't think that's actually the function. बट प्रोटीन सिंथेसिस की बात हो रही है ना यहाँ पे, तो राइट, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द डीएनए सिंथेसिस. मेक सेंस. आई थिंक आप वो जो होता है ना, द सेंट्रल डॉगमा, द सेंट्रल डॉगमा इज फॉर द डीएनए सिंथेसिस ना. नो, Yes, sir. Right. है ना, वो तो डीएनए के लिए होता है. सो दिस इज रिगार्डिंग प्रोटीन सिंथेसिस. और डीएनए के सिंथेसिस में आई थिंक डीएनए इज ओनली यूज जिसमें सिंगल डीएनए का सिंगल स्ट्रैंड रहता है. Sir, एंड like basically the full flow of information. हाँ, DNA बट to DNA, this is the ये synthesis of protein basically. But if you, for example, डेली आपके सेल ग्रो कर रहे हैं ना, और जहां जहां आपके पास न्यूक्लियस है वहां वहां डीएनए होगा. सो रेगुलरली वी आर मेकिंग न्यू न्यू सेल, तो इवन डीएनए का भी तो प्रोडक्शन होना चाहिए ना, डीएनए से डीएनए बनना चाहिए. करेक्ट, एकदम करेक्ट. मी इफ आई एम रॉन्ग, बायो वाले. दिस इज व्हाट आई रिमेंबर, आई डोंट नो. There are two different functions, right? एक तो डीएनए से डीएनए भी बनता है, and then from आरएनए we make the proteins, जिसकी इंफॉर्मेशन फिर डीएनए लेके आता है, डीएनए से आती है. ऐसा नहीं, नहीं है. सेंट्रल डॉगमा में डीएनए से एमआरएनए बनता है और एमआरएनए से प्रोटीन, और अच्छा, रिवर्स दैट भी इज हो सकता रिवर्स भी हो सकता है. रिवर्स कैसे होता है? रिवर्स नहीं the होता. reverse occurs in retrovirus. है. रेट्रोवायरस या अच्छा, ह्यूमंस में नहीं ना.
रिवर्स इज नॉट अगर रिवर्स अगर होता तो भाई पागल हो जाते लोग फिर। आप एमआरएनए डाल रहे हैं और एमआरएनए से अगर डीएनए बनने लगे तो फाइजर का ये है वैक्सीन है, इट वुड बी हार्मफुल देन ना। If mRNA can form a DNA, then it will be very controversial, right? So I think central dogma is only one way information. It is really of एक डायरेक्शन में जाता इन ह्यूमन साइड। आई डोंट नो, आई एम नॉट अ बायोलॉजिस्ट, मेरा बायोलॉजी 12th में भी नहीं था। वो तो केमिस्ट्री की वजह में जो बायोलॉजी है वो मेरे पास है नहीं। अच्छा हाँ ठीक है ठीक। सेंट्रल डॉगमा इज फ्रॉम डीएनए टिल द प्रोटीन। तो देयर इज अनदर, एक और चीज होता है डीएनए का बनना होता है उसको पता क्या, खैर हटेगी। आगे बढ़ते हैं। आप लोग के इसमें ये भी नहीं है बाय द वे, है ना। इवन दीज थिंग्स ना, व्हाट इज द डिफरेंट यूजेस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए, ये है। बट व्हाट आर द यूजेस, इट इज नॉट देयर, ठीक है। बट वो फिर भी हमने लिखा था, एक बार आप लोग को पता करना चाहिए। मूविंग ऑन, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। दिस इज अ टॉपिक इन योर टेक्स्ट बुक, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। सो इसका यूज कहाँ कहाँ होता है? सो इट्स use is basically in forensic laboratories to determine the paternity of an individual, to identify the dead bodies, है ना, by comparing the DNAs of parents or children, then identifying racial groups to rewrite biological evolution. ठीक है, so these are the functions of like uses of DNA fingerprinting. अब DNA fingerprinting होता कैसे? It is based on the sequence of bases. तो if somebody gets some particular cell somewhere, और अगर मैच कराना है तो दे कैन जस्ट मैच द सीक्वेंस ऑफ बेसेस। सीक्वेंस ऑफ बेस अगर मैच कर गया आपका और जो सैंपल है उसका, दैट मींस दैट सैंपल बिलोंग्स टू यू, दैट्स इट, है ना। दैट मींस अगर A T G C G A C इस तरह का सीक्वेंस है आपके डीएनए में, और सेम सीक्वेंस मिल गया सैंपल में, दैट मींस दैट पर्टिकुलर डीएनए सैंपल इट बिलोंग्स टू यू। Moving on, I think we have just some questions left. Oh, these are not edited or what? Solution यहीं पे है। जस्ट गाइस गिव मी अ सेकंड, ठीक है। थोड़ा देर और बस, आई जस्ट हैव टू डिस्कस अ फ्यू क्वेश्चंस एंड देन वी विल बी डन, ओके, डोंट वरी। Just give me one more minute guys, I will be here with the questions.
Yep. हो गया हो गया हो गया। In DNA, the complementary bases are chat. ध्यान से देखिएगा, ध्यान से दीजिएगा, ध्यान से। करेक्ट, वेरी गुड। यस, कृष्ण प्रिया करेक्ट। देखिए कृष्ण प्रिया आ गया ना आपको एक ही क्लास में, बेकार आप Yes. छोड़ के चले गए थे। हाँ ठीक है, वेरी गुड गाइस, है ना। एटीजीसी याद है सबको? एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन एंड साइटोसिन, राइट। अच्छा कुछ वी, अच्छा सी कर रहे होंगे, सी कर रहे होंगे पार्कर, ठीक है। ए किसी ने कहा था एडेनिन एंड गुआनिन नहीं होता है, आई मीन आई थिंक यू सॉ दीज फोर, और आपने कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं, बट दीज आर नॉट कॉम्प्लीमेंट्री, दीज आर द बेसिस विच आर प्रेजेंट इन डीएनए। एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन एंड साइटोसिन। कॉम्प्लीमेंट्री आर एडेनिन एंड थाइमिन, गुआनिन एंड साइटोसिन। आई थिंक आपने उसको करेक्ट भी कर लिया फिर, ठीक है। करेक्ट आंसर इज सी। अरे इज दिस, चलो खैर ये तो पता चली। DNA and RNA DNA are chiral molecules. Their chirality is due to, खैर इसको बता देते हैं, जो डी शुगर है ना आपके पास, शुगर की वजह से वहां पे chirality होती है, I think। ये कीजिए जरा। The coupling between the base unit of DNA is through which bonding? कपलिंग मतलब जो दो बॉन्ड बनते हैं ना, मतलब स्ट्रैंड के बीच में जो होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ विच? यस करेक्ट, वेरी गुड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। द शुगर प्रेजेंट इन डीएनए इज, डीएनए में कौन सा शुगर होता है? यस सेरम करेक्ट, यस पार्कर करेक्ट, वेरी गुड। यस कृष्ण प्रिया करेक्ट, वेरी गुड, ठीक है। इट इज डीऑक्सी राइबोज। पेंटोज शुगर इन डीएनए एंड आरएनए हैज, ये कृष्ण प्रिया आपको नहीं आएगा। बाकी जो लोगों ने, ओपन चेन कहाँ होता है रे भाई? पेंटोज शुगर का ओपन चेन होता है। पायरान या फ्यूरान, इसमें आप लोग को होना चाहिए, पायरान होता है या फ्यूरान होता है? हेरम तुमने तो दोनों आंसर दे दिया, पायरान और फ्यूरान। पायरान या नो फ्यूरान? सर, सी। सी, ठीक है। किसी को अगर याद आए तो याद कीजिए, फ्रक्टो फ्यूरानोज, है ना। और फ्रक्टो में भी 5 कार्बन आटम से बनता है, राइट, ठीक है। चलिए फिर भी सी। जो देखिए पायरानोज में 6 एटम्स होते हैं जिसमें एक ऑक्सीजन होता है, जो कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर में आता है, तो ग्लूकोपाइरानोज एंड फ्रक्टो फ्यूरानोज, ठीक है। फ्रक्टो में फ्यूरानोज और 5 एटम का रिंग होता है, ठीक है। इन द पेंटोज शुगर ऑफ डीएनए आल्सो वी सॉ दैट वी हैव 5 कार्बन का रिंग वाज, सॉरी 5 एटम का रिंग, माय बैड, नॉट कार्बन, 5 एटम का रिंग, ठीक है। दिस इज फ्रक्टो फ्यूरानोज, 555 FFF से आप याद रख सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन, ये बताइए जरा, इन बोथ डीएनए एंड आरएनए हेटेरोसाइक्लिक बेस एंड फॉस्फेट डाइस्टर लिंकेजेस आर एट, बेस कहाँ पे लगा होता है और फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज कहाँ होता है? पहले बताइए बेस कहाँ लगा रहता है, बेस बताना पहले रिस्पेक्टिवली, है ना। पहले बेस कहाँ लगा रहता है वो बताइए, उसके बाद डाइस्टर लिंकेज कहाँ रहता है।